Hello students, our today's topic is question tags and short answers. Chapter 3, question tags and short answers. First of all, question, you know what is a question. Here we will discuss about question tags. Question tags क्या होता है? Okay? So, usually in conversation, we make a statement and ask the listener to confirm it. इसका क्या मतलब है? बट एक क्वेश्चन का तो आपको पता है. अब हमने डिस्कस करना है टैग्स क्या होते हैं. मतलब हमारी कन्वर्सेशन में जब हम किसी के साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. एनी स्टेटमेंट, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, तो उसको एग्री करने के लिए, लिसनर की कंफर्मेशन के लिए, उस चीज के लिए हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. टैग हियर मीन्स जो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ते हैं, उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं. टू मेक इट मोर क्लियर, देयर इज एन एग्जाम्पल. इट इज वेरी हॉट टूडे. इट्स अ स्टेटमेंट. आज बहुत गर्मी है. सपोज आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो, आज बहुत गर्मी है. इट इज वेरी हॉट टूडे. इट्स अ स्टेटमेंट. बाद में जो कुछ ऐड किया, आप उसकी कंफर्मेशन के लिए कि वो एग्री करते हैं, आप बोलते हो ना, इट इज वेरी हॉट टूडे, इजंट इट? आज बहुत गर्मी है ना? है ना? तो दैट इज क्वेश्चन टैग. जब आप उसकी कंफर्मेशन के लिए कि वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देता है, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. यू रीड इंग्लिश. तुम इंग्लिश पढ़ते हो ना? यू रीड इंग्लिश. इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. यू रीड इंग्लिश. डोंट यू? क्या नहीं? तुम पढ़ते हो क्या नहीं? तो वो कंफर्मेशन के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हम ऐड कर देते हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग. इज इट क्लियर? सो अ क्वेश्चन टैग इज नथिंग बट द वर्ड्स दैट कम आफ्टर अ सेंटेंस. जो सेंटेंस, स्टेटमेंट के बाद वर्ड्स आते हैं, दैट मेक you agree with a particular question, that is called question tag. Is it clear? So a question tag is always a confirmation or emphasis of the point you make. जो भी आप स्टेटमेंट देते, कोई भी आप लिसनर की कंफर्मेशन के लिए जो भी आप पॉइंट यू मेक, उस पे जब आप जोर देते हो, एम्फोसिस देते हो, स्ट्रेस देते हो, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. Just like this, it is very hot today. आज बहुत गर्मी है ना? So that is question tags. Here we have some rules. There are 3 rules how to make question tags. First, rule number 1. If the given statement is positive, you know very well what is a negative sentence, what is a positive sentence. Negative sentence in which negative words are there, like no, don't, never. Okay, positive which any statement which doesn't have any negative word. So if the given statement is positive, question tag is in the negative form. See, examples are here. She is preparing well. It is a positive sentence. अगर सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होगा. सी, शी इज प्रिपेयरिंग वेल. हियर यू कैन सी शी इज प्रिपेयरिंग वेल. विच टेंस कैन यू आइडेंटिफाई? यस, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इज प्लस ing form, verb plus ing form. So helping verb here is and main preparing. So to make a question tag, first write the statement, comma, take out the helping verb. If it is positive sentence, add negative word. So here we will use isn't plus subject, she, question mark. So now it's a question tag. She is preparing well. Isn't she? क्या नहीं? Second one, you can solve this sum. तुम ये sum solve कर सकते हो. अब आप पूछ रहे हो, उससे कह रहे हो, you can solve this sum. तुम ये कर सकते हो. क्या नहीं? Okay, again, positive sentence, question tag. Here can, modals, you can, if modals are there, similarly,
see the first example. There was a helping verb. You write it in the beginning while making the question tag. Similarly, in case of modals, write them in the beginning and then subject. So, can't you? Question mark. She helped Tom. Which tense? Simple past. Second form of verb is used here. Helped. So, if helping verb is not there, suppose, okay, if it is in past tense, for past, while making question tag, we use did. If it is present, do or does. Depends upon the subject. So, again positive. Didn't she? Subject after it. Question mark. He has done nothing wrong. उसने कुछ गलत नहीं किया है. Has done. Now which tense? Present perfect. Has plus third form of verb. Now we will take out the helping verb. Has. Now here you can see nothing. Negative word is used. So question tag will be positive. He has done nothing wrong. उसने कुछ गलत नहीं किया. Has he. If it is positive, question tag will be negative. If it is negative, question tag will be positive. Now rule number 2. Use the same tense in which the statement is made. So simple. आपने उसी टेंस में क्वेश्चन टैग बनाना है जिसमें कि आपका स्टेटमेंट है. सेम टेंस you will use. See the first example. You are going on leave. Here, no negative word. And tense, can you identify the tense? Are going, present continuous, verb ing form is there. So helping verb is are, main verb going. It is positive. Yes. Put the helping verb in the beginning. Make it negative. Aren't plus subject. Aren't you? Question mark. Moving to next example. She speaks English fluently. She speaks English fluently. कि वो English fluently मतलब पूरे flow से बोलती है. Present tense, simple present tense. Main verb speaks. Okay. So for present tense, while making question tag, we use do or does. As I have just discussed with you. Depends upon the subject. If subject is singular, does. If subject is plural, we use do. Okay. So, positive sentence, question tag will be negative. Doesn't plus subject she question mark. Moving to next example. They will visit us tomorrow. They will visit us tomorrow. वो कल हमारे यहाँ visit करेंगे. Will visit. Simple future. Okay. Simple future tense. So, there is no negative word. It is a positive sentence. Question tag will be negative. Here, will comes in the beginning. So, negative, make it negative. So, short form of will not is won't. W-O-N apostrophe T. Won't plus subject. Won't they? Question mark. Rule number 3. Use the pronoun as the subject of the question tag. Yes, very important. See, you know pronouns. Okay. To avoid the repetition of the name of a person, name of animal or anything, we use pronouns. Pronouns like he, she, it, they, we. Okay, these are pronouns. See the first example. Gayatri will not oblige you. Will not. Future. Okay, negative word you can see here. Not. So question tag will be positive. Will, here we have used she pronoun instead of the name of a girl. Let's assume girl. Okay. So we will write she. Will plus subject pronoun. Okay. India is a progressive country. Positive sentence. Question tag will be negative.
is comes in the beginning. So positive, let's make it, question tag will be negative. Isn't it? Now it refers to India. आप उसके लिए it use करोगे. Okay? So these are the rules how to make question tags. Very easy. 3 rules are there. Okay? If the given statement is positive, question tag is in the negative form. Okay? Same tense in which the statement is made, वही आप tense use करोगे. And use of pronoun as the subject of question tag. आप name नहीं use करोगे, आप pronouns use करोगे. Is it clear? Very easy. Next we have short answers, जो कि yes or no के form में होते हैं. See, few examples are given. They are very easy. Do you like English movies? जैसे आपको कोई पूछता है क्या आपको इंग्लिश मूवीज पसंद हैं, तो आपने उसका शॉर्ट में आंसर देना है. अगर आपको पसंद है आप क्या बोलोगे? यस आई डू. आप ये नहीं बोलोगे यस आई लाइक इंग्लिश मूवी. सो मेक योर आंसर्स शॉर्ट. डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज? यस कॉमा आई डू. सब्जेक्ट देन वर्ब. ओके. अगर आपको यस है तो यस. इफ नो देन यू विल राइट नो. नो आई डोंट. अगर यस है यस आई डू. कैन यू ऑपरेट एन आईफोन? क्या तुम आईफोन ऑपरेट कर सकते हो? अगर है आप कर सकते हो, यू विल से यस आई कैन. अगर नहीं तो यू विल से नो आई कांट. सो इन दिस वे यू कैन answer the questions in yes no form. Hope the concept is clear to you. This chapter is very easy. Very, very easy. Now you have to do, what you have to do is solve exercise 1, exercise 2 and exercise 3. They are very easy and I know you can solve these exercises very easily. Do the exercises. I see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.